Okay, so 1 minute I'll do one thing. I'll just turn on my video. So for those of you who are attending lectures for the first time, because it shouldn't happen that see ये lockdown तो temporary है. Hopefully it will. I mean क्या बोल रही हूँ या hopefully कभी ना कभी तो ये चला ही जाएगा. We really hope vaccine cure will be found out soon, right? I think you people can see me right now. Yeah, for those of you who don't know me, my name is Heer Jalundwala. I've already taken lectures for you in the first sem. Anyone remembers the subject? Yes, someone is telling. Is there any disturbance in audio, video? Okay, great. It's perfect. Okay. So I'll do one thing. Till what time is the lecture? Okay, till 10:30. So we have less time. Okay, so I'll turn off the video. I'll start sharing the screen. And see one more thing. Don't worry. Like, B, I'm not telling you. If you want, you can take down the notes. Otherwise, in the WhatsApp group, I'm already going to share the notes. Like after every lecture, once we are done with the lectures, ठीक है? So and one more thing, make sure आप लोग पूरा lecture attend करो. Like from start to end. Because क्या है, we are not taking the attendance. Observers आ रहे. So कभी भी they'll check out the list and they'll take the attendance, right? No doubt. For example, if someone is saying कि मैम आज मुझे ठीक नहीं है, नेट कनेक्टिविटी नहीं था, नो डाउट मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा. बट अगेन देन उस पे क्या होगा कि आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, राइट? सो मेक श्योर आप यूट्यूब तभी देखो जब भी ये पॉसिबल नहीं है, बट उस पे अटेंडेंस नहीं मिलेगा. ठीक है? सो okay, I'll just stop the video now. I'll start sharing the screen. Let me put you people on mute, otherwise बहुत disturbance हो जाएगा. Yeah, lecture के जो मे बी 10:30 का तक लेक्चर है. सो I'll do one thing around 10:15 or so. I'll stop. I'll keep a lecture for doubt solving. ठीक है? So आज का lecture again I am not keeping it very boring or something. Let me start. See, strategic management again. If you say it's a very important subject. This you'll also have in your MBA also if someone is planning to do MBA. Right? Strategic management. Okay, let me start sharing the screen. Okay, are you able to see this slide? मैंने एक स्क्रीन शेयर एक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी करके डाला है. प्लीज एवरीवन रिप्लाई. एंड मेरा ऑडियो भी क्लियर है, राइट? ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच. Okay. So, see, first of all, we have to understand the meaning of strategy. Strategic management per now you all are SY students, right? So at least a few concepts. Like even I think in FHS I taught you something about management, right? So basically, anyone remembers? I don't know in your class I've told this or not. If we have to define management to management के students हो in three simple words, how will you define it? Anyone remembers? Have I told in your class? कोई हिंदी में भी बता सकते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? नो वन? Okay, fine. You can take a note of it. Managing men tactfully. Managing men tactfully. I'm also typing it out in the chat box. Is it proper now? Okay, great. 1 minute. Let me type it out. Good. I think Ujjwal wrote a good answer. Yes. Jyoti also very simple words. Yes. Both of you good. You remember मतलब. So अगर three simple words में if I tell you managing men tactfully, right? So इसका क्या meaning है? लोगों से काम करवा लेना.
फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी कोई भी कॉर्पोरेट्स फ्यूचर में आप कंपनी में भी जाओगे, क्या होता है नॉर्मली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं। सो क्या होता है, सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, वक्त पे दे आर कमिंग टू द ऑफिस, टाइम पास कर रहे हैं या रियली काम कर रहे हैं, राइट? उसका सब ध्यान रखना, दैट इज व्हाट मैनेजर्स हैव टू डू, राइट? सो सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो आई थिंक अभी मैंने जूम किया है, कैन यू सी इट? या otherwise this I'm going to share on WhatsApp, so don't worry. So again you can write it down. What do you mean by strategy? सी अगेन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, सी डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स, आई टेल यू ऑनेस्टली, ये जो मेरे नोट्स है, लाइक सी अभी सिंस टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल, मार्केट में भी नहीं प्रिंट होके आए, सो टिल द टाइम द लॉकडाउन एंड्स, यू पीपल हैव टू रिलाई ओनली ऑन माई नोट्स, राइट? एंड दिस इज ये नोट्स काफी अच्छे हैं, लाइक डोंट गेट कंफ्यूज विद द हाई फाई वर्ड्स एंड ऑल, मैं आपको क्लियरली समझा रही हूँ, राइट? ओके ओके, सो सी अगेन मैं आपको, यू नीड नॉट राइट द फुल आंसर हियर, मैं आपको जितना बोल रही हूँ उतना ही लिखो, बिकॉज इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? सो द फर्स्ट वन इज यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, फर्स्ट राइट इट डाउन, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, दिस ऑल्सो आई एम अगेन टेलिंग यू इन 3 सिंपल वर्ड्स। स्ट्रेटेजी, long term planning. Strategy in 3 simple words means long term planning. I am also writing it in the chat box. Okay, fine. So now let me first start by giving you a very simple example. When you all go back to the days when you had just cleared your 12th, before, तभी आई नो बहुत कंफ्यूजन था, येस और नो, मे बी इवन आफ्टर योर 10th ऑल्सो, कि विच स्ट्रीम शुड आई सिलेक्ट, शुड आई गो फॉर आर्ट्स, should I go for science, or should I go for commerce? Now many people might, many of you might have thought कि आगे जाके I want to become a CA, chartered accountant, so मेरे लिए कौन सा field हो गया? Commerce. Okay, now second, like most of the people like you, what you have thought कि BMS is a very good field, मुझे management पढ़ना है, right? Maybe आगे जाके in the future I want to do MBA. See, MBA भी it happens in many fields, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस, मार्केटिंग, बट उतना 10th-12th के टाइम यू डोंट नो कि यू जस्ट नो दैट कि MBA आई वांट टू डू, राइट? सो विच इज द फील्ड फॉर यू? कॉमर्स. सी मतलब यू पीपल टेल मी 10th में अराउंड, आफ्टर 10th और 12th वॉट यू आर डूइंग इज तुम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, येस और नो? लॉन्ग टर्म मतलब क्या? वाई आई एम सिलेक्टिंग कॉमर्स? बिकॉज फ्यूचर में आई वॉन्ट टू बी अ मैनेजर, मैनेजमेंट करना है मुझे, राइट? वॉट आई मीन टू से इज ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है. मे बी वॉट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग फॉर यू ऑल, विच कॉलेज आई विल गो इन, येस और नो, राइट? लॉन्ग टर्म क्या हो गया? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज आई वांट टू बी अ मैनेजर, तो मैनेजर ऐसे ही नहीं बनते, राइट? फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर BMS, देन यू विल सिलेक्ट MBA करोगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा, तब यू विल बिकम अ मैनेजर, येस और नो? सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग. So in the same way, for example, if I am going to start my own company, otherwise या तो मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ. So now you people tell me, मेरे लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगा कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस? प्रॉफिट, येस और नो, राइट? सो अल्टीमेटली यू पीपल टेल मी, अगर मेरा ऐसा टारगेट है कि आई वांट टू अर्न 100 crores फॉर माय कंपनी, इतना अर्न करना है. नाउ यू पीपल टेल मी, मेरा ये जो प्लान है, इज इट पॉसिबल कि ये 1 साल में मैं 100 crore कर लूंगी? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट रियली, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, येस और नो? सो क्या होता है, थैंक यू पीपल फॉर रिप्लाइंग. या सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग की प्रॉफिट कैसे कमाना है मुझे. ओके, अभी कैसे तुम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे इसके लिए? मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपनी में राइट लोग लेके आऊंगी,
यस और नो, लाइक राइट पीपल। उसके बाद क्या, किसी को क्या काम करना है, डिवीजन ऑफ वर्क, वो मैं देखूंगी। यस और नो, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू नो, अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर यू नो राइट टाइम पे हमने राइट चीजें प्लान नहीं की, तो इट विल बिकम, आगे जाके यू विल बी अ बिग फेलियर। यस और नो? Yes, long term planning we have to do. So, now going back to the definition, unified, comprehensive, and integrated. Simple words I am telling you. Unified मतलब क्या? Anyone remembers this clearly? I had told. टीम का फुल फॉर्म क्या है? Anyone? I'll see कौन चैट बॉक्स में फर्स्ट लिख रहा है टीम का, TEAM. Anyone remembers? Write it in the chat box. Let me see how many of you remember the concept. No, team का full form I am asking. I had clearly told. Even I am everyone look at the chat box. Team का full form. Avni, Ujjwal, anyone remembers? Jyoti, मैंने बोला था पूरी throughout your career you have to know this. If anyone wants to speak, they can speak also. No one remembers? Okay, fine. I'll write it. Just remember this throughout. Take notes of it, huh? Yeah. Together, everyone achieves more. See, like you know, BM as being BMS students, या तो आप कभी भी जब you work in any companies, you will have to make sure कि आप team work करो. Yes or no? कंपनी में भी आप जाते हो, देर विल बी हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ऐसा नहीं होता है कि फिनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग विल टेल कि नो वी वांट टू वर्क ऑन आवर ओन। तो ऐसा नहीं होता है, सब में यूनिटी बहुत जरूरी होती है। यस और नो? इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, राइट? सो यूनिफाइड का मीनिंग कॉम्प्रीहेंसिव। सी कॉम्प्रीहेंसिव, ये जो सेकेंड वर्ड है, इसका मीनिंग आई विल टेल यू। comprehensive and integrated, both I'll explain together. See, integrated matlab kya? For example, are you people able to hear me? Please type yes, because like you know I am always used to people speaking and abhi aisa nahi ho raha hai. Okay, great, thank you for replying. So yeah, comprehensive means what? Like I'll tell you, see, company mein if you see, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, वहां पे करोड़ों लाखों रुपयों की बात हो रही है। सो कॉम्प्रीहेंसिव मतलब क्या? अगेन इफ यू रिमेंबर दिस, आई क्लियरली टोल्ड यू पीपल, देयर शुड ऑलवेज बी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। यस और नो? किसी को याद आया? इफ रिमेंबर, like type yes. I think given you an example also कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो। For example, if one day trains are not working, will you not give exams? Yes, I think everyone is remembering. Yes. So ऐसा नहीं होता है basically, right? क्या होगा? ये may be one day you'll, trains are not working, so you'll go by bus. Okay, bus पे भी रोड का स्ट्राइक है, what you'll do? You'll take an auto. So in the same way, कंपनी में भी comprehensive मतलब प्लानिंग में इतना टाइम एंड एफर्ट जाता है, बहुत जाता है, right? And integrated, yes. See, integrated मतलब क्या? I'll tell you. Let's take it that way. BMS के दो divisions है, A and B, for example. So now what is happening is, let me tell you, if I am making any assignment या मैं ऐसा कर रही हूँ, तो can I do it that way कि एक क्लास को मैं अलग दूंगी, एक क्लास को अलग? I mean what I mean to say is, हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, it should be same for all, right? What I mean to say is, maybe अगर for finance department, whatever plan I'll make, सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, राइट? इंटीग्रेटेड मतलब एज आई सेड, सबकी यूनिटी होना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, नाउ सी, अभी आगे का डेफिनेशन, दैट रिलेट्स टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द फर्म। नाउ सी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मतलब क्या? फॉर, इफ यू पीपल रिमेंबर, दिस इज, आई एम टाइपिंग आउट दिस कंसेप्ट, सबको ये याद होना ही चाहिए। यस, डू यू पीपल रिमेंबर दिस? स्वॉट एनालिसिस। ओके, उसमें एस क्या था?
Good strength. Yes. Now see, for example, अगर कंपनी का स्ट्रेंथ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? इट इज बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, उनका इनोवेशन पार्ट बहुत अच्छा है। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, उज्जवल ओवर हियर, ही हैज वेरी गुड स्टेज प्रेजेंस, स्टेज पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट आई मीन इज, यू नो, अगर किसी को, इफ समवन wants to go ahead, maybe if someone like उज्जवल, वो उसका जो स्ट्रेंथ है उसे आगे जाके यूज करेगा तो उसके लिए एडवांटेज होगा, राइट? मे बी फॉर एग्जाम्पल ज्योति है, अवनी है, दीज पीपल आर वेरी गुड एट एकेडेमिक्स, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड नो व्हाट योर स्ट्रेंथ इज, एंड आगे जाके यागेश भी है, लाइक देयर आर मेनी पीपल आई नो, yes, Ajay, yeah. So what I mean, Neha also, what I mean is you should know what your strength is and वो कैसे apply करके competitive advantage, strategic advantage means what? Using it to your full benefit. You should know that, right? Okay. Further part of the definition, challenges of the environment. See, as I told you know, next जो weakness है, like, you know, strengths, weakness, opportunities, threats. तो threats में I told you, challenges तो आने ही वाले. For example, business भी whenever you will do it, you cannot say कि, you know, competition कोई नहीं होगा. So see, for example, take a best look at the example, what's happening now. सब businesses बंद है. Like, you know, even for example, take the challenges for colleges, right? Initially lectures used to happen in classroom, but अभी क्या हो रहा है, सबके लिए it has in a way become a challenge, right? Because we have to take lectures online, you students have to be comfortable with this, right? मतलब business में challenges आते ही रहते हैं. Now if you see the latest trend, work from home job, right? Yes. Okay. Next one, next part of the definition, designed to ensure that the objectives of the enterprise are achieved. This is very easy. Objectives, कोई भी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? एंटरप्राइज मतलब कंपनी ही. सी, ये जो डेफिनेशन है यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट? नो नीड टू राइट द एग्जैक्ट सेम थिंग. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म? बेसिकली द फर्स्ट वन, टू अर्न प्रॉफिट, right? Second most important objective, to overcome competition. Yes or no? To increase sales, growth करना, ये सब basic चीज है, right? Through proper implementation process. See, implement मतलब क्या? ये जो मैंने प्लान बनाया था स्टार्टिंग में, what I had planned, उसे proper implement भी करना है. For example, you know, right planning कर दिया, okay, very good, but उसके बाद में वो प्लान का कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो. For example, in that way only, you know, if after BMS, you people have done your BMS, you have got a good degree, but इसके बाद क्या हो रहा है, you know, you people, हम क्या सोचा कि नहीं मैं घर पे ही बैठ रही हूँ. So I mean, what I mean to say is you are not implementing your knowledge. Yes or no? When you work in any company या तो खुद का business, when you become an entrepreneur, we call it. So क्या होता है? It is तभी वो actually implement होगा, तुमने ये सब जो पढ़ा है वो, right? So yes. So now if you see abhi, what's it's given is the definition of strategy. नीचे जो लिखा है, ये जो 3 points है, as I said, you can see ABC, ये सब cover होने चाहिए basically, right? And see, इसके नीचे अगर आप देखो, another definition is there. Okay. Pattern of response, organization's pattern of response over a certain period of time. See, इसका भी मीनिंग सेम ही है, राइट? टू इट्स एनवायरमेंट, मतलब आप चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर रहे हो. एंड सेकेंड जो बी पॉइंट है, इज टू अचीव इट्स गोल एंड मिशन बेसिकली, राइट? यस. ओके. Now see, I'll do one thing. This is the last concept that I'll cover with today. Okay, you people tell me, up the lecture, how is it going? Is the audio clear? You people have any doubts so far? Please unmute yourself or ask me in the chat box. Because since I can't see you all, so I can't make it out. ओके फाइन, मतलब किसी को डाउट नहीं है.
ठीक है. So the last part I'll cover today. And yeah, one more thing. इसके बाद I'm supposed to share home assignment also with you all. So every lecture के बाद you people please remind me about this, okay? Because I might forget. But home assignment is made compulsory for all the teachers, right? Yeah. Okay. So see, now we can see the last part for the day. Uh, Strategy as action inclusive of objective setting. Okay, now see, इसमें you need not write the first paragraph. जो second दिया है, three types of actions involved in a strategy. First point is very easy, determination of long term goals. So as I have told you, determine long term goals. See, strategic management, strategic planning. Again, as I have told you, it relates to only long term planning. Short term जो भी है, we are not concerned with it. ठीक है. या सेकेंड पॉइंट एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. इसका क्या मीनिंग है? मतलब हम अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, सो हाउ विल वी अचीव दैट प्लान? दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो okay, this I had done. So let me again go to the chat box. Anyone remembers? मैं कोड वर्ड लिख रही हूँ. Anyone remembers the full form? Let me see. POSDCORB. Anyone remembers the full form? Good. Someone has already started typing, planning. Good. Yes, because these all things should be clear to you. Yes, good. Yes, budgeting, correct. What I mean to say here is, I'm again going back to the slide now. Okay. So see, yes, right. Functions of management, correct. So see, allocation of resources, matlab kya? The S that I'm referring to, staffing, means what? For example, placing the right people for the right job, right? For example, as I told, if Ujjwal is good at marketing, so I'll put him in marketing department. For example, अगर रोहित है, अजय है, they are good at finance, बहुत अच्छा है finance उनका, so I won't put them in HR department, right? Marketing में डालूंगी. It works that way. So you should know किससे काम कैसे करवाना है, right? Okay, and now one more point I'll quickly cover. Strategy as action exclusive of objective setting. Okay, we'll do one thing. This we need not write it actually. ये इतना important नहीं है. So I'll give you the assignment for now. Okay. Okay, just give me a minute. I'll share the picture with you all for the assignment. Till now, anyone has any doubts? किसी को कुछ नहीं समझा या ऐसा कुछ? Okay, okay, great. And see, yeah, I don't remember if I told this thing or not. For those of your friends who couldn't attend the lecture, नहीं possible हुआ, I will. I'm going to put this video on my YouTube channel also, but उस पे your attendance won't be marked. So for example, अगर किसी को ये lecture नहीं समझा है, नहीं attend किया है, so in that case you have to, you can have a look at the YouTube video. Okay, and one more thing I'm not able to understand. I think my third lecture is also with you people, right? So I mean, I'm not understanding why are people from same two different divisions attending. या तो आपके divisions change हो गए हैं क्या? Because I think this lecture was. So तुम्हें third lecture किसका है basically? Just now I think from second year you people will be having marketing.
No. What I'm telling is, see, now from second year, you will have only two options, either marketing or finance. I hope you people know that. FY was common for all, but abhi it has changed. Okay, so this is marketing, I'm assuming. Okay, great. Yeah, because I remember pehle Ujjwal, Yagesh, I mean you, Avni, they used to be in different classes. Okay, great. So this is marketing. Okay. So see, I've shared a picture of the home assignment. You people do one thing. I've written the first question. What do you mean by strategy? Do one thing, since आज के lecture में we couldn't complete the second explain the nature of strategy. So ये जो second question है, you write it during the next lecture जब भी होगा. Now you write only the first question. What do you mean by strategy? मैंने आपको ये जो notes again I'll share this slide in the WhatsApp group also, and मेरा जो email ID है I have also clearly written that. HEERJALUN 29 at the rate gmail.com. So write only the first question. What do you mean by strategy? Notes, so I'm sure everyone is in the WhatsApp group. So notes, once the lecture ends, you will get it. And I don't know, मेरा अभी next lecture जब भी होगा, I think it's tomorrow. No, not tomorrow. I think day after Wednesday है. So before Wednesday, share the assignment on my email ID. And I think someone or the other will post it on group key. See, there'll be a common format. So for example, name of the teacher, assignment. So I think that someone, Vijay sir or someone will post on the group. So no need to worry about that. I mean the first page. Especially, write your names clearly. Right? So there's no confusion. Yes, you can ask. What are you saying? What post? Yeah, मतलब see, see, I think first lecture भी आपका जो हुआ होगा, someone must have given you the assignment, home assignment, right? What I mean to say is जो first page होता है, your name, roll number, name of the teacher, उसके लिए सब स्टूडेंट्स का देयर शुड बी अ कॉमन फॉर्मेट. अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स नेम पहले लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट आई मीन टू से उसके लिए कॉमन फॉर्मेट वी टीचर्स आर वर्किंग ऑन इट. सो आई थिंक सम प्रोफेसर वो आपके ग्रुप पे शेयर होके आएगा. व्हाट आई मीन इज, सो एज ऑफ नाउ फर्स्ट पेज मत प्रिपेयर करो, स्टार्ट राइटिंग द मेन असाइनमेंट ओनली. फर्स्ट पेज प्रिपेयर इन द एंड जब वो फॉर्मेट ग्रुप पे आ जाएगा. ओके. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक ये मीटिंग में 40 मिनट्स का लिमिटेशन है. सो अभी आई थिंक हार्डली, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट आउट, ओनली 5 minutes or so something. No, not 10 minutes. We started at what time? 9:45. So I mean, okay. So what I mean to say here is 10 minutes में lecture end हो जाएगा. Okay. And उसके बाद since 5 minutes के लिए again new meeting करने की ज़रूरत नहीं है. So let the lecture end, because ये we don't come to know कब end हो जाएगा. So don't worry now, since we have already finished with today's lecture. Right, last के 5-10 minutes I am keeping it for open discussion only, right? So कभी भी end हो जाए मैं lecture, don't worry, you attend the third lecture जिसका भी है. ठीक है. Okay, so I hope everyone is clear with the assignment question. What do you mean by strategy? Write only the first question. Second question I'll explain it to you in the next lecture. ठीक है. Yeah, anyone has any doubts till now, या तो और कुछ किसी को पूछना है? Like I would also say, like many of your friends also, please tell them to take admissions as soon as possible, because I have seen many students have not come. आपके भी अगर कोई जो friends है
do tell them to take admission, because if you see even these lectures, they are only for the people those who attend. I mean जो लोग का एडमिशन हो गया है, राइट. सो मेक श्योर आप आपके फ्रेंड्स को भी बोलो. And yeah, I think I have told you about textbooks, right? कि अभी textbook no need to worry about that. When college will start तभी I'll tell you, because अब तक actually textbooks print भी नहीं हुए हैं. So I'll again I'll have to see Manan Achai, Vipul Shet. So as of now you can refer my notes that I'm giving you. Okay. Yeah. Rohit has any doubt because someone raised their hands. Which is the next lecture you are having? Okay, and first lecture was? Okay, great. And yeah, again I'm saying one more. Make sure मैं आपको ये सब examples दे रही हूँ that you are taking a note of it. Okay, because ये textbook के answers तो you'll get, but examples का you won't get it anywhere, right? So make sure आप seriously you are taking the notes. And again as I said, कोई दिन lectures miss हो जाते हैं, you are not able to attend, net clear नहीं है. So okay, someone has asked me what is the last day to pay fees. So see, I would say as far as I know, the fees abhi aapko you don't have to pay the full fees. I think you just have to pay 7,000, right? So what I would say is, see, as soon as our seats get full, we'll stop with the admission. So I mean, abhi since it's I think second installment has to be paid later, maybe in the month of August or September. So अभी जो amount है you pay it at the earliest. And yeah, one more thing, see, there are a total of two forms which are to be filled by you. I think first form everyone has filled it, right? So see, आप आपके फ्रेंड्स को भी ये बताओ कि फर्स्ट फॉर्म आपने फिल कर दिया, दैट डजंट मीन कि तभी ना तभी पे करना है. आप फर्स्ट फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद यू विल गेट अ सेकेंड लिंक, सेकेंड फॉर्म. आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट नो दिस, यस और नो? Yeah, I mean, some many people are left out. So, that's why people are asking me about this. Yeah, so that's what I was telling. Subscribe to my YouTube channel and you can again lecture नहीं समझाए कुछ भी doubt है. I'll put this same lecture on YouTube again. ठीक है, so you can watch it again over there. This is what one good thing about online lectures is, I'll just start my video. So okay, should I stop sharing the screen now? Has everyone written the assignment question? एक ही question है. What do you mean by strategy? Okay, yeah, yeah. So today I had, purposely covered not much of the portion because since it's the first lecture, I didn't want it to be too heavy for you people also, right? So just the basic thing I had covered. What do you mean by strategy, right? Okay, so now I think at any point of time the meeting will end now. So don't worry अगर meeting end भी हो जाता है तो, right? I think the next lecture now is at 10:30. Okay, 4 minutes to go. ठीक है. Okay, so since let me ask you one last question. Since हमारे पास time है, so you people tell me. Since goal setting में I had covered one more term, SMART goals. Let's see how many of you remember the full form because this is also very important in strategic management. What are SMART goals? Can anyone write the full form? This I had clearly done in first year. I mean, even if you don't remember
all the 5 words, at least some. I'm typing it in the chat box. Till then, if anyone wants to say, they can write it down. No, smart goals I'm talking about. Yes, someone wrote time is correct. Timely goals. Good, specific आ रहा है. Yes, yes, right. Okay, I've quickly written it in the chat box for those of you who don't know. Yeah. See, because now meeting कभी भी end हो सकता है. So just take a note of it. ये already हो चुका है. Right? Specific, measurable, achievable, reliable, timely. Right? स्पेसिफिक टू द पॉइंट. मेजरेबल मतलब मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने साल में, 1 2 5, मेजर इट. अचीवेबल मतलब ड्रीम नहीं कर रही हूँ मैं, रियलिटी, आई शुड बी एबल टू अचीव इट, राइट. रियलिस्टिक ऑल्सो द सेम पॉइंट. यू नो, इट शुड बी, हम बोलते हैं ना, प्रेजेंट ईरा में वी आर लिविंग, राइट. एंड टाइमली, एट द राइट टाइम गोल्स अचीव करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is the concept which also we have to remember. And SWOT analysis, for those of you who don't know, strengths, weakness, opportunities and threats, right. Okay. Yes. Now see, reliable, realistic, relevant, ये सब के words के meaning same ही है. Textbook में it might be written, so don't get confused about it. Okay. Yeah. So now meeting will end at any point of time. So you now 10:30 you can go to the next lecture because even I have one. Yeah. Yes. If everyone is writing self monitoring. No, Neha, self monitoring is not the right answer. I've written it in the chat box. Now how much time is left? Okay. I think it might get over soon also. Yes. શું છે તમને? છે.